We know very well that y is equals to f of x is a function where x is independent variable and y is dependent variable. क्योंकि x अपनी वैल्यू अपने आप बदलता जाता है और उस अकॉर्डिंगली y की वैल्यू बदलती चली जाती है। अब x की वैल्यू x1 होगी तो y की वैल्यू y1 होगी, x की वैल्यू x2 होगी तो y की वैल्यू y2 होगी, ये x3 होगा तो ये y3 होगा, एंड दिस विल गो ऑन। ओके, यहां तक तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था फंक्शंस में। अब डेरिवेटिव में हमने क्या सीखा कि x में कितना चेंज होने से y में कितना चेंज होता है। Derivative is nothing but change in y, that is dependent variable, due to change in x, that is independent variable. This is given as dy by dx. Okay. Now, we know that y is equals to f of x है, तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोगों ने निकाला dy by dx is equals to f dash of x. तो इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन एग्जैक्टली डेरिवेटिव का उल्टा है। अगर मैं ये dx को इधर लेके जाऊं तो ये हो जाएगा f dash into dx, and if I take integration ऐसा थोड़ा सा बड़ा वाला s, okay, तो integration of this will turn up this y and this into f of x. तो अगर डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन लिया जाए तो वो फंक्शन बन जाता है। ये है इंटीग्रेशन की खासियत। इन शॉर्ट, डेरिवेटिव का सब उल्टा इंटीग्रेशन में होगा। तो वेरी वेरी सिंपल, हम लोग जब किसी चीज का डेरिवेटिव लेते हैं और अगर हम लोगों ने वापस उसका इंटीग्रेशन लिया तो आपको सेम फंक्शन मिलेगा। Now, what are the formulas for integration? इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज डेरिवेटिव से थोड़े से अलग होते हैं। हम लोग चाहिए तो ऐसे ही सीखेंगे। सपोज y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या आएगा? 0। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 क्या आता है? कांस्टेंट। इंटीग्रेशन एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। एक ये होता है, मतलब आप ऐसे s निकालो थोड़ा सा बड़ा लंबा चौड़ा, वो इंटीग्रेशन की साइन। इसे हम लोग इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, and this is called as definite integration. हम लोग दोनों भी सीखेंगे, लेकिन हम लोग पहले इनडेफिनाइट सीखेंगे। बिल्कुल ही उल्टा होता है ये डेरिवेटिव्स का। तो जैसे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है तो 0 का इंटीग्रेशन है कांस्टेंट। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में हम लोग c हमेशा लगाते हैं, तो वो हम लोग आगे जाके लगाएंगे, दैट इज फॉर कांस्टेंट। जैसे x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव 1 होता है, वैसे 1 का इंटीग्रेशन होगा x। Integration of x raised to n dx is x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. The c means constant. We will always have this constant. We should know all the formulas of integration very properly. They are very important. Integration of e raised to x dx is e raised to x plus c. Integration of a raised to x dx is a raised to x log a plus c. Integration of 1 by x dx is log x plus c.
तो जैसे log x का डेरिवेटिव, आप अगर इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये मिलेगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको x रेज टू n मिलेगा। e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x, याचा डेरिवेटिव काढला you will get a raise to x, log x का डेरिवेटिव 1 by x. These are the formulas of integration. Now we will see the rules of integration. इनके formulas just जैसे है वैसे ही use करने आपको. Don't put anything new into this. So if it is kf of x dx integration, ऐसा अगर है तो you can say k taken outside, integration f of x dx. If you have integration of f of x plus g of x dx, then it is nothing but individual integration of f of x plus integration of g of x. अगर multiplication है तो ये अलग होगा, multiplication के rules अलग है और integration में division है ही। तो अगर ये प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। We always, whenever we are taking integration of indefinite type, तो हम लोग हमेशा c को ऐड करते हैं, c is a constant, क्योंकि इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका 0 आ जाएगा। See, integration of e raised to x is nothing but integration of e raised to x plus 0. तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाता है, इसलिए वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x plus integration of 0. So it is e raised to x plus constant. We will always add this c. If you don't add this c, your answer will be given as wrong. These are the basic formulas of integration. So after we have done all the formulas, let us see how to use it. So if I have to find integration x square dx, it will be x, it is in the form of x raised to n. So it will be x raised to 2 plus 1, 3 upon 3 plus c. तो आप अगर इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको x स्क्वायर मिलेगा। If I say x raised to 3 by 2 dx, तो ये क्या हो जाएगा, x raised to 3 by 2 plus 1 upon 3 by 2 plus 1 plus c. So that is x raised to 5 by 2 upon 5 by 2 plus c. So it is 2 by 5 x raised to 5 by 2 plus c. Then integration e raised to x dx is e raised to x plus c. But if I have integration 2 raised to x dx, then it is 2 raised to x upon log 2 plus c, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला है इंटीग्रेशन e raised to x, that is e raised to x, और यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला दे रहे हैं इंटीग्रेशन a raised to x dx, that is a raised to x upon log a plus c वाला फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx is equals to log x plus c. Now let us take some advanced sum. If I have integration x square plus x dx, this is one function plus another function. It can be written as integration x square dx plus integration x dx. So what will be integration of x square? It will be x raised to 3 by 3 plus x raised to 2 by 2 plus c. This is x raised to n. So x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. If my integration is, this is only to make clear the concept how to find out integration. 2x plus 1 dx. So I can write it as integration 2x dx plus integration 1 dx. So 2 integration x dx plus 1 का इंटीग्रेशन x आता है और x का इंटीग्रेशन आएगा x square by 2
plus x plus c. 2 cancel, this will be x square plus x plus c. This is the integration. If suppose I get something like this, integration x plus 1 by x dx. This will be integration x plus integration 1 by x. ये dx है, ये dx है. Integration x dx will be x square by 2 because 1 x means what? X raised to 1. So 1 plus 1 upon 1 plus 1 plus. What is integration 1 by x? It is x raised to minus 1. But 1 by x चा integration log x तुम्हाला directly दिलेला आहे. So we will only use that formula. So integration 1 by x is log x. So we will use integration 1 by x is log x plus c. This is your answer. लेकिन अगर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x raised to 3 है तो ये log x raised to 3 नहीं आएगा. ये आएगा इंटीग्रेशन x raised to minus 3 dx. That will be x raised to minus 3 plus 1 upon minus 3 plus 1 plus c. That is x raised to minus 2 upon minus 2 plus c. This will be minus 1 upon 2x square. And x raised to minus 2 will go in the denominator. Plus c. You may keep it as it is till here. It is also right. So this is how we can integrate different values. ये जो फॉर्मूले है इंटीग्रेशन के जो पहले हम लोगों ने लिखे थे वो आपको लर्न हो जाने चाहिए. So let us do this sum of the sums to understand the concept. The first is 2 minutes. Okay. So these are some of the extra sums. Let us see how to do this. This is x raised to 4 by 3 dx. Integration x raised to 4 by 3 dx is in the form of x raised to n. So it will be x raised to n plus 1. That is 4 by 3 plus 1 upon 4 by 3 plus 1 plus c. So this will be x raised to 7 by 3 upon 7 by 3 plus c. This is 3 by 7. X raised to 7 by 3 plus c. The answer for the first sum. The second sum is integration 7x plus 1. Integration 7x plus 1 dx. If I open the bracket, it is integration 7x dx plus integration 1 dx. This is integration x dx plus integration 1 dx. What is integration of 7? Sorry, 7 is constant, so it will be outside. Integration of x is 7, x square by 2 plus integration of 1 is x plus c. तो ये 7x plus 1 इसको हम लोगों ने अगर dx के साथ मल्टीप्लाई करके ओपन किया तो ये होगा इसका इंटीग्रेशन. Then next is this 7x plus 2 bracket square. Integration 7x plus 2 bracket square dx. Now this bracket square we can easily expand this as integration 49x square plus 14 into 2, that is 28x plus 4 dx. So this will be 49 integration x square dx plus 28 integration x dx plus integration 4 dx. 4 dx या फिर ये 4 हम लोग बाहर लिखेंगे और 1 dx. This is 49 x raised to 3 upon 3 plus 28 x square upon 2 plus 4 1 integration x plus c. This is your integration. हम लोग कुछ नहीं कर रहे, कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, बस फॉर्मूला है
कि x raised to n का इंटीग्रेशन x raised to n plus 1 upon n plus 1 है. Constant we are keeping as it is. Let us take the third one. Okay, we have already done the third one. The fourth one. This was the third one. So now the fourth one. Fourth one is 6x square plus 5x plus 1 by x. So it is 6 integration x square plus 5 integration x plus integration 1 by x dx. ये सबको dx अप्लाई होता है, उसके बिना इंटीग्रेशन ही नहीं निकलेगा. So I should rather write down this as, इसको ब्रैकेट डाल देंगे and then it will be integration 6x square dx plus integration 5x dx plus integration 1 by x dx. 6 integration x square dx plus 5 integration x dx plus integration 1 by x dx. This is 6. X square से integration ये x raised to 3 upon 3 plus 5 x से integration ये x square by 2 plus 1 by x से integration है log x plus c. This is 2x cube plus 5x square by 2 plus log x plus c. This is the integration. बस हम लोगों ने फॉर्मूले यूज किए, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 1 by x का इंटीग्रेशन log x. Then let us go to the next sum. 1, 2, 3, 4, 5. Integration 5x minus 3 bracket square. Integration 25x square minus this 15 2s are 30, 30x plus 9 dx. 25 integration x square minus 30 integration x plus 9 integration 1 dx. 25 x square the integration है x cube by 3 minus 30 x square by 2 plus 9x plus c. This is the integration. x square का integration x cube by 3 और 25 ऐसे 30 x का integration x square by 2 9 1 का integration x plus c. Then the next one, this is whole is divided by x, so we'll divide it by x actually. So it is integration x cube so let us divide it by x. X cube by x is x square plus 4x square by x is 4x minus 6x by x is 6 plus 5 by x dx. Is integration x square dx plus integration 4x dx minus integration 6 dx plus integration 5 by x dx. Integration x square का ये था x cube by 3 plus 4 integration x dx minus 6 integration 1 dx plus 5 integration 1 by x dx. This is x cube by 3 plus 4x square by 2 x से integration minus 6 1 से integration x plus 5 1 by x से integration log x whole thing plus c. ये plus c नहीं लिखा तो पूरा आंसर रॉन्ग बोलेंगे हम. यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, सबको बस x से डिवाइड कर दिया क्योंकि सबके डिवीजन में x है कॉमन डिनोमिनेटर, and then we have simply integrated. Now the second last one is root x. रूट x कैसे करेंगे, क्योंकि रूट x का तो इंटीग्रेशन है ही नहीं. x raised to 1 by 2. Root x dx is
integration x raised to 1 by 2 dx. This will be x raised to 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1 plus c. X raised to 3 by 2 upon 3 by 2 plus c. It is 2 by 3, x raised to 3 by 2 plus c. This is your integration. Good, Karan. That's right. Now the last one. Integration x square root x dx. X square root x क्या होता है? By the rules of indices, it is x raised to 2 plus 1 by 2. That is x raised to 5 by 2. तो ये होगा x raised to 5 by 2 dx. That is x raised to 5 by 2 plus 1 upon 5 by 2 plus 1 plus c. So x raised to 7 by 2 upon 7 by 2 plus c. That is 2 by 7 x raised to 7 by 2 plus c. This is your integration. ये तो काफी बेसिक सम्स थे ताकि आपको वो समझ में आ जाए कि इंटीग्रेशन एग्जैक्टली होता क्या है.